good evening once again. A warm welcome to all of you and welcome once again in this special session of Spoken English and Personality Development. We are over here to discuss all the aspects related to confidence building, personality development, body language training, soft skill training, and above all, speaking English fluently. This is a game of practice. Like we people, although we can speak in Hindi or Punjabi, but we are not that well versed with the grammar rules of Hindi and Punjabi. So what if we don't know all about grammar of Hindi, grammar of Punjabi? We can speak Hindi and Punjabi well. The same way, the rules of grammar not play that important a role in learning speaking English. Speaking English with fluency, speaking in English confidently. So there are many tips and tricks. There is all about, this is all about practice, practice, and practice. We have to give ourselves an environment of spoken English. Look, I'm going to tell you a few tips. Here we are. Let me share my screen with you over here. I hope now you can see my screen. Can you see my screen well? Look, the first thing first, I am going to tell you some tips and 75 is to 25. What is 75 is to 25 rule? Those people who want to improve their English, someday in beginning become very much eager to speak more and more. But equally important is listening to others. There are four components. Are reading, writing, listening, and speaking. This should be 75. Speaking. When you are in a group, throughout your day, concentrate on the first three things also. Means start reading newspaper. Start reading some good books. How will it help you? When you talk to somebody, it's not only speaking in English confidently and speaking English fluently, you should have a content. So what's going on in this world? You should know. You should know about the areas of interest. What people are talking about these days. What writers are writing about these days. What's going on in and around the world. So from where will you go this thing? Two inputs. Input number one is the reading. Input number two is listening. This is input two. So very important. Input one and input. I give too much of importance to these two. Why and how? Let's proceed further. Look, talking about reading. You all have heard books are one's best friends. Have you heard of it? ठीक है, किताबें एक इंसान का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मित्र होता है. ठीक है. Inculcate a habit of reading. If you read novels, if you read some good books, it's very good. Otherwise, you should be regular with newspaper. Two things. One is news, and the second one is editorial. You will get a refined
You will get a refined flow of English language if you are regular with editorials. How you use phrases, how you use idioms. You will come across many new phrases, idioms, and then your vocabulary. Okay, what is vocabulary? Dictionary, your mental dictionary, Shabdkosh. So, use of phrases will be very important for you. I will discuss with you daily some new phrases, some new words. I'll take that out from the newspaper. I will speak less, you will speak more. I will give you topics to speak, but you have to speak on those topics with some new words. We will have a word of the day. Word of the day. Daily, I'll give you a word. But today only, I went to a new word, resolute. On the very first page of Hindustan Times, there is a news of clash between Indian forces and Chinese forces in Arunachal Pradesh. And they wrote, amidst high sensitive relations between India and China, talks are going on the Arunachal Pradesh issues, and some clash had been there. There had been injuries on both the sides. It was the Chinese side who gave provocation to Indian आर्मी मेंबर्स. भारतीय फौजियों को प्रोवोक किया चाइनीज लोगों ने, और इस पर हमने रेजोल्यूटली जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की. रेजोल्यूटली, व्हाट इज रेजोल्यूट? क्या ये मुंह तोड़ जवाब होता है? रेजोल्यूशन क्या होता है? रमन आप बताएं, रेजोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज रेजोल्यूट? रेजोल्यूट पेपर, संकल्प लेना, संकल्प लेना, रेजोल्यूशन करना. दृढ़ निश्चय से जवाब देना, यानी कि रेजोल्यूटली जवाब देना. समझ में आया? क्योंकि रेजोल्यूशन मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि इस बार हम अपना वेट कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ भी ऐसा. ये हमारे क्या होता है? रेजोल्यूशन. ये हम निश्चय कर देते हैं, दृढ़ निश्चय. और रेजोल्यूटली क्या होता है? दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप जवाब देते हैं तो उसे कहते हैं रेजोल्यूट. समझ में आया? So Nitesh came for the physical class today. There were more than 40 students who decided to become either a judge, IAS officer today in the school of Government Model Senior Secondary School, Sector 16. But who came for the class resolutely? Nitesh. This is, he did something resolutely. Everybody says, मुझे IAS बनना, मुझे जज बनना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. एक्शन क्या लिया? This is resolution. समझ में? resolutely समझ में आ गया? So इस वर्ड को अब पीना है आपने. अब आपको, अगर आज आपको रेजोल्यूट वर्ड को अपना बनाना है तो रेजोल्यूट वर्ड को 2-4 बार यूज करो अपने दोस्तों के साथ, मोहिपा के साथ. बोल देना, आज क्लास गया, रेजोल्यूटली क्लास गया हूं मैं. क्या गया है? मैं रेजोल्यूटली कि रेजोल्यूशन के अंतर्गत क्लास में गया हूं, रेजोल्यूशन के अंतर्गत गया हूं. इनमें रेजोल्यूशन ले लिया, कुछ बन के निकला. एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं, जिसमें मुझे राज करना है, मुझे टॉप पे जाना है. समझ में आया? और मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा. समझ में आया? तो ये मेरा रेजोल्यूशन है, और ये कारण है, कोई और नहीं. सबके सब टॉप पे नहीं पहुंचते, सबके सब टॉप पे पहुंचना चाहते हैं. कौन पहुंच पाता है? पैसा तो कोई 1-2 ही ले पाते हैं, बाकी सब कहते रहते हैं हाँ मुझे भी करना. करना तो मैंने भी है,
वैसे तो मैंने भी करना है, नहीं वैसे तो मैं भी सोचता हूँ टॉपिक पहुंच जाऊं, ऐसे थोड़ा पहुंचा जाए, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता, समझ में आया? स्वर्ग के लिए सच में मरना पड़ता। हाँ जी, मरते तो सब है, स्वर्ग सबको थोड़ा मिलता है, ठीक है। आज के पेपर में जो फर्स्ट पैराग्राफ है न्यूज का, उसमें क्या न्यूज है? इंडिया और चाइना की फोर्सेस में भिड़ंत हुई है, जैसे पहले गलवान वैली में हुआ था, वैसा कल दोबारा हुआ है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, इंडियन फौजी चाइनीज फौजी आपस में लड़े, उन्होंने हमें भड़काया, तब ये लड़ाई हुई। तो सेंटेंस ये यूज हुआ कि इंडियन आर्मी मेंबर्स, ठीक है, gave a reply to the provocation given by the Chinese soldiers. We gave a answer resolutely and both sides got injured. कि जो उन्होंने किया हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की रेजोल्यूटली, रेजोल्यूशन के अंतर्गत, हम दबेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा रेजोल्यूशन। इज माय पॉइंट क्लियर? तो रेजोल्यूटली काम हुआ, इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय के साथ। रेजोल्यूटली यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ। ओके फाइन। तो ऐसे न्यूज पेपर अगर आप पढ़ेंगे, रोज एक दो नए वर्ड मिलेंगे, मुझे मिलते हैं, मैं फिर उसके बारे में बात करता हूं ताकि वो हमेशा के लिए मेरे अपने हो जाए। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है जी, तो ये आप भी स्टार्ट करें, ठीक है। हर रोज थोड़ा समय इंग्लिश न्यूज़पेपर पर लगाना शुरू करें। मैं इस क्लास में हर रोज आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग कराऊंगा, और स्पीकिंग पर ज्यादा ध्यान दूंगा। समझ में आया? ये दो, रीडिंग है इनपुट, लिसनिंग है इनपुट, ये है आउटपुट, ये है आउटपुट। दो इनपुट है, दो आउटपुट है। इनपुट जिसके द्वारा नॉलेज हमारे अंदर जाएगी। स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश न्यूज। संसद टीवी रोज रात को 9 बजे सरकारी चैनल है, पहले इसका नाम होता था आरएस टीवी, राज्यसभा टीवी, अब इसका नया नाम क्या है? संसद टीवी। इंडिया टुडे, ग्रेविटास, बियॉन्ड, ये कुछ चैनल्स हैं जिसकी न्यूज आपको रोज देखनी है, हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी दिखाना चाहूंगा, बीबीसी भी इंग्लिश न्यूज चैनल है, पर मैं उसके लिए अभी आपको नहीं, क्योंकि मैं आपको किसके पास में कहना चाहता हूं? हिंदुस्तानी इंग्लिश, एंड नॉट ब्रिटिश एक्सेंट, एंड नॉट कैनेडियन एक्सेंट, एंड नॉट यूएस एक्सेंट। समझ में आया? आई वॉन्ट to inculcate in you our own Indian accent of English. Okay, we have a better English. Look, here we go. This is YouTube. Let me once again share my screen. Your screen. Your screen. What? So here it is. Daily, we should know what is going around India, going in India. 2-3 channels I am going to show you today. This is YouTube Studio now. I don't want Studio. This channel is. Hello. I can remember a book of 200 pages.
pages in just 7 days along with the page number. Hi, my name is Bhuvan Dhanesha and I'm going to teach you how to remember few of the most all the propaganda from China is. Nobody is seeing the usual Global Times and, Xinhua and all the rest of them with their usual statements about seeing it for the last 2.5. The problem on ground. That's why these kind of statements and claims that India needs to work together. So it's trying to send a message that they have to be the aggressor and things are okay. And the other is playing victim at times. That Happened in eastern Ladakh, and now we are seeing this happen here. And whenever there is a clash or a face-off, this is the script that China usually follows. Bring Geeta in as well for a perspective on this. Geeta,
this statement from the Chinese saying India should manage its troops better, work towards maintaining peace. Pretty vanilla compared to the stuff we've been used to since 2020. How are you seeing this? Well, the fact that the Chinese are, see, in a way, we're looking at China maybe testing waters. In the other perspective that we see is that Xi Jinping is under tremendous pressure. Could be diversionary tactic. We've seen that in the past as well. Given that back home he's facing a lot of flack. But asking India to manage troops better is certainly not what the Chinese are used to. But the first part of the statement, very, very important, because it is something that China has been doing and dealing with India also. They've been saying the same thing, that that it was Indian troops that first transgressed and the Chinese reacted, which is really not the case. And they've not done that only with India. They've been doing that with every country that they have been an aggressor of. And that's certainly a part of their playbook. Be it India, what we're looking at. What do you understand, Nitesh? What do you think she has told you? What is victim card? China is playing victim card. What is victim card? She told, na? What is it? We say that Chinese soldiers provoked Gussa Dila India, then we reacted. They say the same thing. Indians took Panga, then they reacted. So we are the victims. China is saying, Chinese government is declaring that they are victims. They are not the first one to take Panga. It was Indians who first take Panga. Okay, so they are playing victim card. Listen, it isn't listening now. Okay. More you listen, more knowledge you get. Give yourself an environment of English. Reading, writing, listening, speaking. All the four things are required. Only then you can improve your English. Okay? Now, moving forward. At is an aggressor trying to first find space, invade or enter a territory and then blame the other. Having said that, the larger perspective again, one will have to look at the fact that India is in a leadership role, so the responses are going to be rather matured, despite the fact that India will fight for every inch of its territory, irrespective of which the country or who the aggressor is. But the fact is that there is a presidency to handle, and India is going to behave and manage these tensions also in a very matured manner, which you will see in coming days. One phrase, irrespective of the fact, whoever is the opposite party, who is ever. Look, irrespective of the fact, whoever is on the opposite side, irrespective of the fact. What is the meaning of this expression, irrespective of the fact? फिर चाहे कोई भी, समझ में आया? फिर चाहे ऑपोजिट साइड से कोई भी हो, हम जवाब देंगे। इररिस्पेक्टिव का मतलब फिर चाहे समझ में आया? फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, और ये ऐसे ये फ्रेजेस लिखो, ठीक है? इररिस्पेक्टिव का मतलब है फिर चाहे कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ, irrespective of, फिर चाहे कुछ भी हो. Next. Apart from the fact that the statement of Rajnath Singh, the defense minister, was very, very mature, very strongly worded, strongly put, but also explaining India's position and what India did. So India is not going to take China lightly, but India also has a lot more responsibility than just handling an irksome China. So that makes a lot of sense, and that's the kind of perspective we wanted to give to our viewers as well, because most people are wondering, where's the old global times, where's the the usual vicious propaganda that one saw blaring out from Beijing shortly after the Galwan clash. So you've got the G20 and all of those other things that Geeta just mentioned that puts that into perspective. Geeta and Abhishek will continue to report for us on this big unfolding story. Thanks to them for the moment. Now, India Today, remember, has been reporting. Look, he used one word, big unfolding story, right?
big unfolding story. What is unfolding story? Nita will keep on reporting on this big unfolding. Unfold. What is unfolding? रहस्य बाहर आ रहे हैं. जब रहस्य बाहर आ रहे होते हैं हमसे कहता है the unfolding story, यानी अंदर की बातें बताओ. समझ में आया? हाँ, जिसके पन्ने भी खुलने हैं. अनफोल्डिंग स्टोरी, रहस्य बाहर आने वाली कहानी. वो कहानी से रहस्य बाहर आ रहे हैं. अनफोल्डिंग स्टोरी, ऐसे सीखेंगे हम. समझ में आया? सुनेंगे, पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर के सामने. कल से आप सबके हाथों में न्यूज़पेपर होना चाहिए. हम देंगे आपको. क्लियर? आई विल गिव यू न्यूज़पेपर. यहीं पर हम कुछ न्यूज को डिस्कस करेंगे. फिर उस न्यूज के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन कराएंगे. क्या चल रहा है देश दुनिया में, वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. यू विल गेट अ वीडियो ऑन डेली बेसिस. क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या बड़ी खबरें हैं आज के पेपर की, और फिर यू विल स्पीक ऑन दैट टॉपिक. आपकी प्रेजेंटेशन होंगी इस पोडियम पर. समझ में आ गया? तभी क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा. ओके. और अब इस चैनल के बारे में थोड़ा सा और बताऊं. इस चैनल का नाम है इंडिया टुडे. ओके. तो यहां से आप इस चैनल के अंदर जा सकते. ये चल आ गया और ये है इसकी वीडियोस, पॉपुलर वीडियोस. जो इंडिया का लैंड रेवेन्यू वहां पे कहीं मेंशन करा हुआ है. इंडिया का मैप भी डायरेक्टली इतनी कहां पर किसी तो में मेंशन कर रखते हैं. कहां पे कितनी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या होगा, शेड्यूल बन उसमें बता देते हैं. ठीक है जी. इसी वजह से इशू है कि अगर इंडिया में किसी मेंशन किया होता देन ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ठीक है जी. ये इनके पॉपुलर वीडियोस, और इसमें आप जाओ प्लेलिस्ट पे. समझा रहे जी. जितने भी न्यूज है उसके बारे में, जितनी, जैसे मोरबी ब्रिज कोलैप्स इन गुजरात. अब ये ब्रिज टूटा, कहां पर टूटा? गुजरात में. कई लोग उस हैंगिंग ब्रिज में मर गए. उसके ऊपर जितनी भी खबरें हैं वो सारी स्प्रेड. समझ में आया? गुजरात इलेक्शंस, यूके प्राइम मिनिस्टर, T20, ठीक है, लाफ्टर राजू श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रेसिडेंट. आज चीता की खबर आई थी कि सब चीताज केम टू इंडिया, है ना. तो उसके बारे में इंग्लिश में जो खबरें हैं, आप कोई भी एक ऐसा टॉपिक पकड़ सकते हैं. नोएडा, टी राजा, इंडिपेंडेंस डे 2022, मूड ऑफ द नेशन. अच्छा टॉपिक करता हूँ. जैसे टेक्नोलॉजी न्यूज है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है, इसको पकड़े. देखिए आपकी नॉलेज भी बढ़ती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या क्या आ रही है. ठीक है जी. ये PP Gurnani of Tech Mahindra on tech sector slowdown concerns. Samsung Galaxy unpacked. जो नया कुछ भी आ रहा है उसके बारे में. 5G speeds in India hitting 500 Mbps on test networks. Ukla report. Quartz EV Fluid by Total Energies. Our latest innovation to ensure optimal temperature for your battery. Okay, I promise I'm not being touristy here in Berlin. What I am trying to do on the new iPhone 14 is get you a sense of what 4G speeds are all about, because I'm not getting a 5G connection. 74 Mbps is fascinating that you're getting this on 4G. Maybe 10 times that is what you'd expect on 5G. But in India, well, of course, we have 5G networks that have become active. But what are the real speeds all about? Here's a Business Today TV special report. 5G services were launched in select Indian cities by Prime Minister Narendra Modi on the 1st of October. A survey by Ookla shows the 3 5G operators are still calibrating their networks, ensuring that they are stable as they go commercial now.
There's huge volatility in the network with 5G download speeds ranging from 16 Mbps to 810 Mbps in tests conducted since June of this year. In Delhi, Airtel has reached median speeds of 200 Mbps, while Jio has shot to This is something. Okay. The news 202. This is the English news. Delhi at 9 p.m. Latest news. Start watching the news. And with minutes. Our top focus is Bhupendra Patel takes the oath of Chief Minister of Gujarat. Along with Bhupendra Patel takes over as Chief Minister of Gujarat. First news. we give updates from the ongoing winter session of the Parliament. Let's begin with the headlines first. This Monday evening, Rajya Sabha passes Energy Conservation Amendment Bill 2022. Bill empowers Centre to specify energy consumption standards and require designated consumers to meet a minimum share of energy consumption. On the other, Lok Sabha discusses supplementary demands for grants. New law passed. 41.5 crore people were freed from poverty in the last 15 years. The government cites United Nations Development Programme report, asserts that many steps are being taken up for the uplift of the poor. Bhupendra Patel sworn in as Chief Minister of Gujarat for second time. Governor also administers oaths to 16 ministers. Prime Minister Modi congratulates new government. UGC launches curriculum and credit framework for undergraduate programs with multiple entry, exit points and re-entry options. Graduation in 3 years and honours degree after 4 years. Yes. Retail inflation at 11-month low touches 5.88% in November compared to 6.77% in October. Industrial production continues to decline. And time now for some speed news. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-UAE cooperation not about surviving change but shaping it positively. Now tell me, who this man is in the center? Nitish. S. Jaishankar. Which ministry he has got? Simran. He is a Union Cabinet Minister now. So which department head he is? He's head of the which department? Come on, Sandhya. The man in the black coat. You tell me, Preeti. The man in the black coat in the mid. Of which department is he the head? Come on, Preeti. Anybody? Foreign Minister. He is the Union, he is the Cabinet Rank Minister, and he is Minister for External Affairs. Okay? Then, next. Government issued 3,58,000 crore rupees under Emergency Credit Line Guarantee Scheme till last month. MOS Finance, Dr. Bhagwat Karad informs Lok Sabha. Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia pays surprise visit to Indira Gandhi International Airport in Delhi, inspects congested areas. Jyotiraditya Scindia, and which minister? Civil Aviation. Earlier he was in Congress party, then he shifted from Congress to which party? BJP. He is from which state? He is from Madhya Pradesh. Okay? So he is from the family of Madhav Rao Scindia, famous personality of Madhya Pradesh. Okay? So
This way we'll be discussing news. Okay, all news only in English language. Then you will be presenting the news. Daily you will be given a chance to speak in English language. So most students will be joining the timings of 5 p.m. to 6 p.m. on the daily basis. Will be given time to speak. So this is your homework 12th date news. This link I will discuss with you. I will share with you. Here it is. Mute your mic. IELTS 3388. ये आपको अपने आप कर देना चाहिए। ठीक है जी, चलो आज के लेक्चर को हम अब यहाँ समाप्त करेंगे। ठीक है जी, और आपको मैंने एक आइडिया दिया है आज कि क्या क्या मेन बातें होंगी आखिर के 5 मिनट। सुनो जी, द टिप्स। पहला, बी अ पेशेंट लिसनर। 75:25 की रेशियो होनी चाहिए। किस चीज की? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सबको 25-25 देना है। तो स्पीकिंग शुड बी 25%। ठीक है, आपको हर रोज एक पेज लिखना भी है। ठीक है, जब आप कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, ठीक है, आपका इनपुट और आउटपुट का बैलेंस बनेगा। अगर 4 लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश में, हर कोई अपनी ही बात बोले जा रहा है, तो लड़ाई होगी। समझ में आया? तो बी अ पेशेंट लिसनर एज वेल। स्टार्ट नोटिंग पॉइंट्स। न्यूज को सुनना, न्यूज़पेपर को पढ़ना, अच्छी बुक्स को पढ़ना, कुछ शब्द निकालना, इडियम्स निकालना, फ्रेजेस निकालना, और फिर अपने शब्दों में कुछ लिखना और फिर उसको बोलना भी। ये रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एक्सरसाइज 5 PM to 6 PM में करें, और वो भी करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, देश दुनिया में क्या चल रहा। समझ में आया? ये स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमारा पार्ट है। ठीक है, मोरओवर मैं कल का जो एक्सरसाइज रखूंगा वो करूंगा कॉन्फिडेंट स्पीकिंग कैसे। ठीक है जी, फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव, इंग्लिश को हम बढ़ाएंगे, अपना इंप्रूव कैसे करेंगे। थर्ड पॉइंट, फ्रेजेस के द्वारा। मोर एंड मोर फ्रेजेस। फ्रेज क्या होता है? एक से ज्यादा वर्ड्स का मिलन। जैसे कि हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स एक मुहावरा है, यानी दायरे से बाहर का कुछ सोचो, कुछ नया सोचो, इनोवेटिव सोचो, क्रिएटिव सोचो। आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो गया? मुहावरा। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस पर हम ध्यान देंगे। क्लियर? फिर हम यहाँ पर कुछ डिबेट्स कराएंगे जिसमें हीटेड कन्वर्सेशंस भी कराएंगे। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यू लर्न हाउ टू आर्ग्यू इन इंग्लिश। यू विल बी गिवन अ पॉइंट, जैसे मेन आर बेटर और वुमेन आर बेटर। हीटेड आर्गुमेंट हो सकता है इस पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भगवान है या नहीं है। ये वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हीटेड आर्गुमेंट टीम्स बनाएंगे और हीटेड आर्गुमेंट्स करेंगे। समझ में आया? ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है उसमें। जितना बोलोगे इंग्लिश उतनी आएगी। फिर क्वेश्चन आंसर राउंड मेरा अगला स्ट्रेटजी होगी। एक दिन रखा करेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड का, कि जिसमें पहले से एक बंदे का लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होगा, वो दूसरे से आंसर्स पूछेगा। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। क्लियर? अगला होगा, एक चीज है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, बाकी लोग आपसे बात करना चाहें, बाकी लोगों का मन करे आपके पास बैठने, आपसे बात करने का, तो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इट इज कॉल्ड कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। Everybody wants to have a charismatic personality, magnetic personality. Conversation tips क्या है? सबसे पहला तो ये है, be a good and a patient listener. People love sitting with them who are patient listeners. ये एक रूल है। ठीक है, अच्छा
तो ये आप दूसरे बंदे की बात में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपको लग रहा है कि दूसरे बंदे को मजा आ रहा है मेरी बात सुनने में, ठीक है। और फिर कुछ सीक्रेट टिप्स भी होते हैं कुछ। इफ यू कैन हैव करेज टू लाफ ऑन योरसेल्फ, मेरे से इतना भी नहीं होता, मेरे से नहीं उठाया जाता, इस तरह की बात कर खुद अपने ऊपर अगर आप हंसने की कला रखते हो तो दूसरे को लगता है यार कितना खुल के बात करता है। समझ में आया? ये कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं। अगर जब तक आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज नहीं आ जाती कि आप दूसरों को हंसा सकें, समझो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ कमी है। तो आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी, सुना है? Yes. इंग्लिश में स्टैंड अप कॉमेडी के द्वारा अगर आप दूसरों को हंसाने का दम रखते हैं तब आप में दम है, नहीं तो नहीं है। इंग्लिश छोड़ो, पहले क्या हिंदी में स्टेज पे खड़े होकर बोलकर लोगों को हंसा सकते हो? लोगों से वो भी नहीं होता, घबरा जाते हैं। समझ में आया? तो स्टैंड अप कॉमेडी, ठीक है, यहां खड़े होके ऐसे बोलना सुनने वालों को मजा आ जाए। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यही कर रहा हूँ, आप लोग बैठे हो, बोर तो नहीं होने दे रहा। समझ में आया? ज्ञानी पेल रहा हूं, समझ में आया? तो ये कला है कैसे आप अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने ये सिखाना है कि कल को जब आप भाषण दे लोग सच में आपको सुने, ना कि ये करें। मेरा पॉइंट समझ में आया? तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैं आपको दूंगा। बीइंग अ गुड ओरेटर, हाउ टू बी अ गुड ओरेटर, रूट्स ऑफ इंटरेस्ट पता होने चाहिए। समझो, अपनी बात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यू नीड जड़ें। कौन सी जड़ें? इंटरेस्ट की जड़ होती है। कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में लोग आगे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे मोदी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वुमेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, शादी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूक्रेन वार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझ में आया? जो अभिव्यक्ति है, एडिटोरियल कॉलम है, खबरें है, खास करके एडिटोरियल कॉलम इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर ही लिखा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं, हिजाब होना चाहिए या बैन लगना चाहिए, स्कूल में हिजाब अलाउड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, समलैंगिक रिलेशंस, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, ठीक है, LGBTIQ टेक्नोलॉजी कम्युनिटी। समझ में आया? कौन है एलजीबीटी? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इनको लेकर लॉ क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ, फिर लिव इन रिलेशनशिप, उसको लेकर लॉ में क्या बदलाव आ रहा है। परसों की जजमेंट है कि कभी भी मर्डर की सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट से कम नहीं होनी चाहिए। एक हाई कोर्ट ने सजा, डेथ पेनल्टी को माफ करते हुए, डेथ पेनल्टी की सजा को माफ करते हुए लाइफ इंप्रिजनमेंट से कम कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मर्डर की सजा कम कर सकते हो आप, डेथ पेनल्टी को चेंज करके लाइफ इंप्रिजनमेंट कर सकते हो, बट लाइफ इंप्रिजनमेंट इज मिनिमम। कम से कम लाइफ इंप्रिजनमेंट तो दो। ये नया लॉ बना है 3 दिन पहले, आईपीसी में आया है। लॉ कैसे बना है? जुडिशरी ने बना दिया जजमेंट के द्वारा। जगजीत सिंह वर्सेस आशीष कुमार वाला जजमेंट है। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है। जो अजय मिश्रा के बेटे के ऊपर केस हुआ था, जो गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों पर, उसको लेकर चार्जेस लग गए उसको, वो भी आजकल खबरों में चल रहा है। यू शुड नो, ठीक है, कि आजकल समाज में क्या चल रहा है, किसके बारे में बातें हो रही है, तभी आपकी बातें इंटरेस्टिंग होगी, आपका डिबेट इंटरेस्टिंग, लोग सुनेंगे तो सही। समझ में आया? यू विल गेट सम कंटेंट टू स्पीक ऑन, ओके। तो कल से हम कंटेंट पर काम करेंगे। सबके पास न्यूज़पेपर होगा, नए वर्ड्स निकालेंगे, नई न्यूज निकालेंगे। इंग्लिश न्यूज चैनल का लिंक मुझसे लेकर जाओ। समझ में आया? ये देखिए, मैंने कॉपी किया उस लिंक को और यहां से मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। हियर इट इज। यूट्यूब पे लिंक पे भी डाल देंगे, पिन करके। सिर्फ ऑनलाइन आईएएस कोचिंग में मैंने यहाँ वॉच कर, ये है 12 तारीख, यानी कि कल रात की खबर, सरकार की खबर, इंग्लिश में खबर।
समझ में आया? ये मैं रोज देता रहूंगा, अब आप लोग चाहते हो लेते हुए जाओ, सुन के आना, कल इन न्यूज के बारे में डिस्कस और आपको इंग्लिश में बोलना है व्हाट इज द न्यूज ऑल। ओके, रोज इंग्लिश बुलवाऊंगा आपसे, सुन के आओगे इंग्लिश, बोलोगे इंग्लिश, कुछ लिख के लाओगे इन्हीं न्यूज के बारे में। इंग्लिश की राइटिंग भी हो गई, न्यूज पढ़ोगे, रीडिंग राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, ऐसे इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ओके फाइन।